सब हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक नए से चैप्टर्स के बारे में। क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड को अगर ध्यान में रखें तो ये क्लास 9 का दूसरा चैप्टर है। अभी तक जो हम बात कर चुके हैं वो 1.1 एंड 1.2 के बारे में बात कर चुके हैं। हम ऑल्सो ये बात भी कर चुके हैं कि कैसे आप जो सॉफ्टवेयर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस या फिर आईसीएसई के सिलेबस ब्लूजे सॉफ्टवेयर वो कैसे यूज कर सकते हो एंड उसमें कैसे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बताया। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर एंड दैट इज नन अदर देन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, ये क्या होता है भैया? मैं यहाँ पे बात करूंगा चैप्टर 2। सो एलिमेंट्री concept of object and classes. Okay, elementary concept of object and classes. अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। कैसे डिटेल्स में बात करेंगे भैया? बहुत सारा कुछ के बारे में बात करेंगे। जैसे ये चीज हो चुका है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, एंड जो ओवरऑल इसके बारे में हम क्या बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है एंड उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम क्लास एज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास, मैसेज पासिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्लास, class as an object factory, class as an user defined function, declaring state and method of a class, object as an instance of a class, difference between class and object। ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये सारा का सारा टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो बिकॉज इट्स रियली, मतलब मैं, आप देख सकते हो अभी मैं आया हूँ आफ्टर 9 to 5। आप 5 to 9 जब करते हुए ना बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना पड़ता है लेक्चर्स। फॉर दैट इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, ओके, लॉट ऑफ एफर्ट्स यू नीड, लॉट ऑफ मोटिवेशन यू नीड एंड अगर मुझे भी ना मोटिवेशन मिले तो मैं कहाँ से करूँगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट, ये सारा का सारा कुछ मैटर करता है। मतलब अच्छा सा कमेंट, मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा अच्छा ही करना है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप चीज़ बता सकते हो। ये सारा का सारा चीज़ ही एक मतलब एज ए टीचर या फिर एज ए टीचर तो मैं खुद को उतना बोलता नहीं, बट एज ए बिग ब्रदर हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिना टाइम वेस्ट चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स, ओके, सो object is a fundamental unit of the object oriented programming. Again I am repeating the same thing that an object is a fundamental unit of object oriented programming and representation the real life entities. In object oriented programming the atoms are made to break a task into some components that is called object. ओके अब इस ऑब्जेक्ट को हम दो तरीकों में डिवाइड करेंगे। व्हाट आर दोस? एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होता है। टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स आर इन टू पार्ट्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। Okay, now what is real life, real world objects? Real world, not real life, okay, it is real world, so it will be real world objects. Real world objects are those which we experience or use in our daily life. A specific item can be defined as a real object if it passes through following features. What are those? First, it should be visible to us. Second, it has a definite shape and size. Okay, these are the two conditions for the real world object. So we can write it here like this.
it is visible to us. Okay, it is visible to us. Okay, it is visible to us. Second one, it has a definite shape and size. It has a definite shape and size. Okay, बढ़िया. Now here we okay, now we are going to discuss about the some examples. Example can be anything, as we had discussed previously also. An object can be anything, be it of this styler, it can be the mouse, it can be the watch, or anything, or any living entities like any kind of animal, everything, it can be the objects. Okay, now all of these objects, okay, all of these objects, there are some characteristic of this, and there are some behaviors are of every object are there. For example, if we take some characteristic of the object, so we can take characteristics are, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडल का अगर ऐसे बात कर सकते हैं, अगर कोई मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, अबाउट मोबाइल फ़ोन, अबाउट मोबाइल ऑब्जेक्ट, मोबाइल इज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है. अगर इस मोबाइल ऑब्जेक्ट से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होता क्या है. नॉर्मली इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ओके, हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट contains characteristic and behaviors. The characteristic basically comprises the parts of its body or specification, whereas behavior is the purpose of its use or its function. Okay, you have to remember that. For example, a mobile phone can be defined as a real world object that possesses some characteristic and the behavior as explained previously also, or right now I am going to explain. For example, characteristic of mobile characteristic can be, so we can say this mobile characteristic can be, what are those? It can be model, okay, it can be model. Second one, dial pad. Third one, app. Okay, now what are the behaviors then? The behaviors can be, so I'm writing the behaviors. Okay, behaviors. So what is the behaviors are? Behaviors. Okay, behaviors are. So behaviors are, it is used to talk. It is, behaviors means that functionality used to talk. Second one, it is used to browse the internet. Okay, browse the internet. Okay, third one is, it is also used for net banking. Okay, so these are the behaviors of a mobile. Now again, if you take another example of what table, this table, okay, this table, if you take table characteristic, so table characteristic are, it has a plain glass top. Okay, now most of the table, the second one has that it has 4 legs. table का 4 legs ही होता है. It is made of the wood, plastic, or whatever table. For example, this table, it is made with the plastic. Okay, and what are the behaviors are, it is used to keep copies, books, computer, to record this video, and it is used for the study purpose also. It is used to keep all these items organizedly. Okay, these are the behaviors of the table. Okay, now we are coming to the
द सेकेंड और द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, okay, software objects. Now a software object may be defined as an object that is created while writing a Java program. जब भी एक जावा प्रोग्राम आप लिखते हो तभी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है। ओके, अब द कैरेक्टरिस्टिक एंड द बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू एज द डाटा मेंबर्स, ओके, एंड मेंबर फंक्शन ऑफ और मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। कैसे? मान लो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ, सो कैरेक्टरिस्टिक के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक को हम डेटा मेंबर्स के साथ तुलना कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स, ओके, मेंबर्स, एंड जो बिहेवियर है उसे अपन फंक्शन के साथ तुलना कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जहाँ पे आप लोगों को एक टेबल के थ्रू बताया जाएगा कि कैसे ये दोनों चीज आप आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट, स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक, then behavior. Okay, so what will be the first one? Then the first one will be, this will be real world. Okay, so real world example, book is there. Okay, second one is the chapters, pages, these are the state or characteristic. Okay, and third one is topics. बिहेवियर क्या हो जाता है? बिहेवियर, इट कैन बी यूज्ड टू रीड, यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स, okay, this is the behavior of a book. Similarly, if you talk about the software objects, how it will be, so we can say this for the software we can say this, so software, so it can be student, okay, then here it comes to data members, and here it is functions. Okay, so here we can write name of the student, we can write subjects, what are the subjects a student is learning, and their marks. Okay, here we can write accept, display. Okay, now we coming compare, now this is the time we can compare with these two. Okay, with these two. How we can compare? We can compare like this, that all the characteristics, these characteristics with this data member, we can compare with these two, and we can compare these two. Okay, this is how we can use or we can make a relation between real world objects and the software objects. Now come to the point, that third point, we can say this message passing. Okay, what is this, sir? It is interesting to know that the objects can interact with each other. An object can pass information to another object and receive information as well. Okay, they interact through behavior or function, which are better known as message passing. This concept is applicable to real world objects as well as the software objects. वो कैसे होता है भैया? Now मैं एक आप लोगों को एक डेमो देता हूँ, ठीक है? कैसे? मान लो ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द डेटा. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एक फंक्शन है,
फंक्शन है, ये आपका डेटा है। ओके, नाउ how this will be the message passing, okay, from here to here message passing is happening. So this will be the object 1, obj1, and this will be the obj, or we can say obj a and obj b. Okay, object a and object b. So this is how we pass the message as we have discussed. Okay, now I am going to discuss about the class. What is this, sir? A class, as discussed previously also, we have discussed about the class, and an object is a unique entity possessing some characteristic and behavior. And all of you, like, you might be thinking that from where the characteristic and behavior are embedded in that object, right? It is done with the help of a class. Basically, a class is a blueprint or template for its object. So we can say this: class is a blueprint or template of for its objects. Okay, understood? So this is about the class. Now we can say in a different way that a class is a blueprint, or the best way we can explain a class in that way that a class is simply a representation of similar type of object. It is the blueprint, plan or template that describes the details of an object. Okay, hope it is understood by you. Now हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, लाइक कुछ क्लास, जैसे मान लो हम एक क्लास ले लेते हैं. कैसे क्लास? हम ले लेंगे क्लास, एक कार ले लेंगे. ठीक है, एक कार है. अब नैनो एक कार हो चुका है, टियागो, और हो चुका क्रेटा. ओके, क्रेटा हो चुका है. उसके बाद हो चुका है BMW. Okay, so all of these are the car, right? So we can say this an object is all, these are the all objects. Okay, an object is also called as an instance of class. Creating an object of a class is said to be instantiation. Okay, ये क्या होता है भैया? कहने का ये मतलब है, मान लो अगर आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, नैनो, नॉट नाना, इट्स नैनो कार. ओके, दैट टाइप ऑफ कार. सम ऑफ यू डोंट इवन नो व्हाट इज नैनो कार. ओके, सो ये सारा का सारा कार, नैनो भी एक कार है, टियागो भी एक कार है, क्रेटा भी एक कार है, BMW भी एक कार है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं ये जितना जो कार है, ये हर किसी का जो ब्लूप्रिंट, सो सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो नैनो भी एक कार है, ये भी सिमिलर है टू द टियागो, टू द क्रेटा एंड BMW. सो ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट जो जिसका है वो कार का ही ब्लूप्रिंट है, राइट? यहाँ से हम बोल सकते हैं का जो क्लास होते हैं, अगर ये चीज क्लास है, ये चीज अगर क्लास है, सो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स. ओके, देन भैया ये चीज बता दीजिए कि हम कैसे फिर ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. Okay, so very simple. First we will learn the syntax. We have to follow some three methods. First one, you have to declare, then instantiation, then you have to use the new keyword. How? First one, it should be class name. Okay, class name, then object name, then equal to new
class name. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। भैया ये तो सिंटेक्स का जो भी डमी पीस वो हो जाए, एक रियल लाइफ भी हो जाए। सो इफ यू टेक इन दिस कार इज अ क्लास, सो वी कैन टेक इट एज ए, सो कार then BMW equal to new car. Now you guys must be thinking why this new car keyword is we are using and what does it mean. A new when जब भी आप ये न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो, द टाइम यू आर यूजिंग द न्यू कीवर्ड, तो ये आप एक डायनामिक मेमोरी अलॉट कर रहे हो फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। सो इसी तरह से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास। ओके, हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। let us take an example of class car. The characteristic or behavior can be defined like it can be the characteristic can be the color, model, and behavior can be the journey and demo. Now if we take about this all the cars, Nano, Tiago, Creta, and BMW, all of this behavior is same. Or what are the behaviors? We use this as for the journey, and we use this for that to roaming here or to go from one place to another place, right? The work is or the behavior is same for all the car. Okay, only the characteristics are the difference. For example, some color is a red color, some of them are blue color, some of them black color, some of that A series, some of that B series, some of that I series. This is the difference only between that. So we can say this, all the color, different color model, these are the characteristic of that car, and the behavior is we use this for journey. Okay, hope ये चीज आपको समझ में आ चुका है। नाउ हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। व्हेनेवर वी यूज any kind of program, whenever we write any kind of program, we use that real life or real कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो आप एक एम्प्लॉय का सैलरी जनरेट करने के लिए एक एम्प्लॉय को हर महीने कैसे सैलरी मिलता है, उसमें कितना % टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बारे में आप लिखना चाहते हो। सो उस एम्प्लॉय का हर एक एम्प्लॉय का डिफरेंट एम्प्लॉय होता है, एक ऑफिस में डिफरेंट डेजिग्नेशन होता है, डिफरेंट डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों को सैलरी मिलता है। सो वी कैन से दिस फॉर एम्प्लॉय इज द क्लास। ओके, एम्प्लॉय इज द क्लास। सो फॉर फर्स्ट वन इज द राहुल, ओके, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। Okay, second one who is getting different salary, we can say this employee, then this is Sachin equal to new employee. Okay, new employee. Okay, so these are the two objects we have created, software object we have created in our program, जो प्रोग्राम हम आने वाले टाइम में भी रन करके देखेंगे। ओके, होप दिस थिंग्स इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्लास। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, you will gonna learn during whole course. What are those? There are some important terms that we come across during the discussion of the class, and they are like class as an object factory. Why we are saying this? With this one class, we can create unlimited objects. Okay, that's why we call it as a class as an factory object as an object factory. So we can write this, we can say class as an object factory. Okay, object factory, because class always represent like a blueprint, right? So if you have blueprint, for example, if you want to build a house, right? If you have that first structure, the builders will give you the structure, how many rooms are there, where is the bathroom, where is the kitchen, and all. Based on that, you can create multiple objects, right? Multiple house you can create it the same way. That's why it is
called the class is as called as an object factor. Okay, hope ये चीज अब समझ में आया है. Now class is user defined data type. We can call similarly, we can say class is a user, okay, user defined data type, okay. Now why we are saying this class is user defined data type? If you look carefully, okay, if you look carefully here, so this is employee is the class and this is the that object name. So here it is considering as a data type, so we can say this is created by the user to make this one, okay, this object. So we can say this one will be the data type of this particular object. Okay, hope you understood this thing. So that's all about the chapter related to elementary concept of object and class, and hope you guys understood about this. एंड अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट रह गया है अभी तक, सो यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. बाकी मिलते हैं किसी और एक नई टॉपिक के साथ नई चैप्टर में. तो बाय, शेयर, हैव ए गुड डे. बट अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.